welcome viewers. You're watching Times Now. I'm Richard Sharma and we are starting with the news that we have been reporting since yesterday in a shocking incident being reported of a TV actor, Kashmiri TV actor, in fact, who was shot at, and also she lost her life in a terror attack. And not just her, even her young nephew, who was attacked and shot at while this entire incident was reported on Wednesday. Let me also now go across to Sohail joining us on this broadcast, who is at the residence of Amreen and with the family. Yes, Sohail, over to you. Suhail, if you can hear me, you are at the residence of Amreen, and this was around 7:55 p.m. when the terrorists had barged into their residence and asked Bhatt's nephew to call her. As soon as she came out, they fired multiple rounds of bullets at her, and her nephew was also injured. Well, exactly. I am right now inside the residence of Amreen Bhat, was in fact last evening targeted by terrorists, in fact killed inside. I will just request my VJ to show you these rooms where in fact Amreen was. In fact, terrorists initially had informed her nephew to call Amreen, and this is a room where she was in fact killed. We are in fact joined by the brother-in-law of Amreen Bhat. ये कल शाम जो है exactly क्या हुआ, आप हमें थोड़ा सा बता पाएंगे? मैं उस टाइम नमाज़ पढ़ने के रहा था, नमाज़ ख़त्म हुई, नमाज़ को थोड़े से 2-3 मीटर थे तो मैंने फायर सुनाया। जब मैं वापस आया तो यहाँ पर अमरीन की लाश पड़ी हुई थी। उन्होंने मेरी बेबी गई थी वहाँ 5-10 दूरी के पास, वो गाय को दूध लेने गई थी। उन्होंने कहा बाद में 2 बंदे आए हैं, उधर वो नीचे रहे। उन्होंने मेरे बेटे को 10 साल का बेटा है, उसको बुलाया, कहा कि मासी कहाँ है, उसको बुलाओ, हमें शूटिंग पे जाना है बड़गाम। बस इतने से मेरी बहन इधर निकली बेटे के साथ मेरे जगह, फिर उन्होंने उस पर गोली बरसाई। 2 गोली उसको लगी, एक मेरे बेटे को बाजू में लगी। तो हम देख रहे हैं लगातार इनोसेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे टेररिस्ट को क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? हमारे पास उन्होंने ये जो कुछ आया है बहुत बड़ा जुल्म है। इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा था उनको? ये ड्रामा में काम करती है, 10-15 साल हो गए, इससे पहले कोई शिकायत नहीं। सीधा आया, उस पर गोलियां बरसाई। क्या खतरा थी उस मासूम का? ये बहुत बड़ा जुल्म है। So the family here in Chadora, Badgam is devastated by this incident. In fact, the Amreen Bhat was a 35-year-old woman, was in fact a television actor, was earning. We can see also the condition of family is very poor. And in fact, this Amreen Bhat was earning for her family. She was helping her family, working with Doordarshan as television actor. And then she started actively posting those short videos on social media sites, Instagram and Facebook. In a way, she was social media influencer. This is the second incident. I would like to remind, earlier a police constable was also killed in Saura area of Srinagar. In fact, there her daughter was also injured by the terrorists. The number of incidents have gone up wherein these civilians are being targeted. We have also seen that incident wherein Kashmiri Pandit Rahul Bhat was killed. He was in fact also killed in Chadura area. It's the same area. Now we are being told that this particular village is just few kilometers away from that spot. You can also, I would like to request VJ to show this spot as well, where the relatives and neighbors of this family are inside this tent, where they are in fact wailing over the death of this Amreen Bhat, who was in fact killed last evening here in Chadura area, Badgam. Hishur is the exact village. Number of people have been coming here, in fact ladies, grieving this death of Amreen Bhat from last evening. As I said, that the family is devastated by this news. She was in fact the bread earner for her family, supporting her father by posting those shorts videos on social media sites, Facebook and Instagram, as well as working with Doordarshan as television actor. Stay with us, Sohail, and who has been reporting live from the residence of Amreen. We'll also play out the version coming in from the father of Amreen, who is now asking these terrorists, these radical elements, what was her fault? कल रात 7:45 बजे 2 बंदे आए, उसने ढूंढा अमरीना, मेरा छोटा भाई
उधर उसी को बोला अमरीना कहाँ, उसने बोला वो अंदर है कमरे में। उसने बोला उसको आवाज़ मारो, यहाँ निकालो बाहर। अमरीना आया बाहर उधर, उसने बोला 2-3 दिन हमारे साथ आओ शूटिंग पर। वो शूटिंग कहाँ, वो बड़गाम के साइड में। उसने बोला हम उधर आज नहीं आऊँगा, मैं 5-6 दिन रेस्ट करूँगा। बस इसने पिस्टल निकाला तो फिर मारा फायरिंग, मारा गोली यहाँ बच्चे को आए यहाँ। फिर उसने उठाया, हमने उठाया, ये तो ले आया चाडोर से हरा पर गया। ऐसे में वो गुजर गया, फिर लाया गया वापस घर। मैं और मेरे साथ यहाँ जम्मू कश्मीर का हर आर्टिस्ट जो है वो दर्द में है, और बस यही कह सकते हैं कि मैं बच भी जाऊं तो अकेला रह जाऊंगा। मेरे कबीले का हर शख्स आज कत्लगाह में है। ये और हाँ, एक और बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज ट्वीट कीजिए, आज छाती पीटिए ना आप लोग, आज छाती पीटिए। एक मासूम लड़की को कत्ल कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो मतलब एक ऐसा काम कर रही थी जो आपकी नजर में गलत है, लेकिन वो माँ सरस्वती की बेटी थी। अफसोस में है, शर्म में है, अफसोसनाक, शर्मनाक। Going once again back to Sohail, who continues to join us live from the residence of Amreen, and we just heard the father and the friend of Amreen once again highlighting the fact that her only fault was she was an independent working woman on television and also on social media platforms where she used to share her videos. And we just heard the friend saying how all the artists, they feel under danger because there are certain radical elements who do not believe they should be doing this. Well, there have been those artists, in fact, independent people here, in fact, who have national sentiments here in Kashmir Valley are being threatened time and again. We have seen this. In fact, the Amreen Bhat was an independent lady, as you rightly mentioned. She was working and, in fact, a television actor. Then she moved to social media, posting those short video clips, making fun of things, in fact, touching very sensitive issues in Kashmir Valley. So she was in a way independent woman, and in fact helping her family. It's a poor family. We are here. In fact, this is the room where she was in fact killed. This is what family is telling us. Her brother-in-law here as well. We have seen a lot of media people. Again, we'll try to get in touch with her father, who was in fact at that moment present. पहले तो आप के साथ पूरी हमदर्दी है कि इस तरह की घटना घटी। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि कल क्या हुआ उस टाइम? कल आया ये 7:45 बजे 2 बंदे। मेरे छोटा लड़का उधर 11 साल का दरवाजे पर, उसने दरवाज़ा खोला। फिर उसने बोला अमरीना कहाँ है? उसने बोला घर में है, अंदर है। उसने बोला उसको आवाज़ मारो बाहर निकलने की। ये आने कोई 2 बंदे आए बाहर, ये तुमको ढूंढता है। आया तो बैठा, उसने बोला क्या बात है? तो शूटिंग 2-3 दिन है हमारे साथ। उसने बोला वापस हम नहीं आऊँगा। तो क्यों? हम जान पहचान वाला नहीं है, तुमसे नहीं आऊँगा मैं। उसने पिस्टल निकाला तो शूट कर दिया। बस ये है पता। इससे पहले उसको इस तरह की कोई धमकी मिली थी? ना, कोई धमकी। अगर कोई धमकी है तो घर में बैठेंगे तो परेशानी क्या है? आपको क्या लग रहा है क्यों टारगेट किया? आप क्या समझ पाए? वो पता, अल्लाह को पता है, हमको क्या पता। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि जो इनोसेंट्स को हम देख रहे हैं, पुलिस इसका सजा अल्लाह देंगे, हम क्या करेंगे? इसका खून ज़ाया नहीं होगा। क़यामत के दिन को हिसाब लगेगा इसको। आपकी कितनी मदद कर रही थी अमरीना? वो सब मेरा बेटा भी है, बेटी भी है, सब कुछ भी है। मेरे 50-60 साल लगता है 5-6 महीनों को जम्मू में, वो खर्चे भी वही उठाता है। दवा ववा शवा सब कुछ उठाता है यही। 6 महीने के बाद यहाँ लाया, यहाँ भी खर्चा वही उठाता है। घर का खर्चा भी यही उठाता है। इस बच्चों को भी खर्चा यही उठाता है। हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कश्मीर घाटी
के अंदर इस तरह से जो आम शहरियों को टारगेट किया जा रहा है, फिर हम अपने पॉलिटिशियंस को भी देखते हैं जो इसको चीज़ को कंडम भी नहीं करते हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, कोई और हो, इस तरह के लोगों को आप क्या कहना चाहिए? गवर्नमेंट वनस ये देनदारा मारान दोस मारान बह नफर ये गवर्नमेंट कुछ क्या कल गरस मज शायद सुबह मातम तो यह ओत पे बडगमस मज कत्या हालात गई अमे कस्म की वो क्या कर तम बेचार मे मर अत लड़की वो क्या कर मे अहन यह मे मत पानस पे वो So the family here, in fact, the father of Amreen Bhat is hopeless. He's in fact showing that hopeless. There's no government in the Jammu and Kashmir, and no politician has been made accountable. But this is what he's trying to tell us, that there has no hopes with. They have no in fact hopes with those people who are in fact here in Jammu and Kashmir, especially the politician. We have some more people here outside sitting. We'll try to bring them also. थोड़ा सा आप बताएंगे कि इसके बारे में, अमरीना के बारे में, आप उनको जानते थे, कैसी लड़की थी और किस तरह से अपनी फैमिली को वो सपोर्ट करती थी? वो तो अपनी फैमिली को तो उन्हीं के लिए कमाती थी, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भतीजों के लिए, अपने बाप के लिए, उन्हीं के लिए कमाता था। कितना बड़ा दुख है इस परिवार के लिए, इस तरह से जो 35 साल की अमरीना थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, सोशल इश्यूज़ पे वो बात करती थी, सिर्फ अपने घर के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं थी बल्कि सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट थी कि वो सोसाइटी में जो इश्यूज़ है उन पे बात करती थी, लोगों को खुश करती थी, लोगों को हंसाती थी अपनी वीडियोज़ के सिरे। वो बात तो ठीक है, क्या बताएंगे हम, मेरे तो ऐसे अल्फाज ही नहीं हैं क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मगर मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। मैं तो यहाँ 25 साल से पहले ही निकला हूँ, मैं दूसरी जगह पर रिहाइश पजीर हूँ। मुझे कल जब फ़ोन आया 8:15 के करीब, मैं पहुँचा चाड़रा से श्रीनगर में, वो उसके रास्ते में ही डेथ हो चुकी हुई है। वहाँ से मुझे दूसरी बहन थी बड़ी, फिर मैंने उसी को घर लाया था। वो तो अपनी इसी बहन के लिए कर रही थी, अपने उन बच्चों के लिए कर रही थी, अभी अनमैरिड थी। तो प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी से अभी तक बात हुई? कोई नहीं आया अभी। सिर्फ तो जो कुछ किया है तो कल पुलिस ने ही किया है, उसने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की है, उनको जो करना था उन्होंने तो किया है। वो मौके पर साथ थी, SMHS में साथ थी, यहाँ तक भी साथ थी, मगर एडमिशन अभी कोई नहीं आया। ऐसे लोग जो इनको टारगेट करते हैं, इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया, जैसे अमरीना को टारगेट किया, आप उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? वो तो उनको क्या कहेंगे, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। उनको भी पहले सोचना था कि ऐसा कौन सा जुर्म किया था उसने, क्योंकि अगर उसको पहले वो कुछ वार्निंग देते, कुछ कहते, ठीक है, सीधा उसको मारना था। या उस छोटे बच्चे पर उन्होंने रहम नहीं किया, उसको फायर किया था। इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। तो अभी तक आपको इससे पहले इस तरह की कोई वार्निंग नहीं थी, कोई कुछ थ्रेट नहीं था? कुछ नहीं था। अभी तक तो उसने कुछ नहीं बोला ही नहीं किसी को। अगर कुछ होता है तो वो बोल दी थी जरूर। कितने साल से दूरदर्शन के साथ काम कर रही थी? लगभग 10-12 साल से। 12 साल से। तो 12 साल में इस तरह का कोई चीज़ नहीं हो? कोई घटना नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं हुआ है। So the family members here, in fact the relatives, are saying that she was working from last 12 years with Doordarshan, in fact working as a television actor, but she was never threatened by any radical element or terror organization. But this time the militants, 2 in number, have in fact gone inside this house from this in fact this door. They have informed Amrina to come out, but later she was killed inside. Then the family had informed police. Police was on support. They have registered a case. Investigation is up. Kashmir police says that 3 LED militants are involved in this terror incident. All right, continue to be with us, Sohail, even as we have some more breaking news coming in. This time, Narottam Mishra has questioned the silence of the Congress High Command, including Rahul Gandhi.
He has now stated that why didn't Rahul Gandhi tweet about Yasin Malik? Did Digvijay Singh tweet or react, or did Sonia Gandhi tweet or react on the entire issue of him getting a life imprisonment? This shows that he was a Congress-sponsored terrorist, they say. We'll first listen into what Narottam Mishra said. अच्छा, यासीन मलिक के मामले में आप बताओ, कोई राहुल जी का ट्वीट आया या प्रतिक्रिया आई? दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आया, प्रतिक्रिया आई? माननीय सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया या ट्वीट आया? इससे यह सिद्ध होगा कि यासीन मलिक कांग्रेस के द्वारा पोषित आतंकवादी था। न्यायालय ने उसको आतंकवादी सिद्ध किया है। All right, let me also now go across to my colleague Pradeep joining us live on this broadcast. So Pradeep, on one hand, we have been showing the plight of Amreen's family members who are devastated on her murder, her brutal murder by these terrorists. On the other hand, there is a silence that we are witnessing over Yasin Malik. What do you have to say to those Kashmiri leaders who are shedding tears for Yasin Malik, a terrorist responsible for the killing of several innocent people in Kashmir, but absolutely no word whatsoever from the Congress? Nothing can be more tragic and unfortunate than this thing. They are selectively shedding tears, and they are shedding tears for whom? They are shedding tears for murder, they are shedding tears for terrorists, but they will not be speaking for Amreen. And right now I've got another terror victim with me, Vikas Rana. His father was also killed by terrorists in 1997. He will be connecting more with the parents than anybody else. Kaise dekhte hain, how you see this thing? That no tweet, no condemnation, nothing, no sort of protest from the Kashmir-centric politicians when Amreen was killed yesterday. All about these politicians. They are hand in gloves with terrorists and Pakistan establishment. I want to ask Mahbooba Mufti one thing, that why isn't she on streets right now protesting for Amreen, protesting from Muzaffar? I know she won't protest for Kashmiri Hindus because she was the one who was actually responsible for the exodus of Kashmiri Pandits right from 1986 onwards. But Amreen was a Kashmir ki beti. Mudassir was Kashmir ka beta. Why isn't she on streets? Where are placards? Where are her supporters? Where are tweets? Other things which she is only crying from Yasin Malik. See the irony, Yasin Malik is the same person who had kidnapped his sister. She should be one who should be going to courts and telling them that punish Yasin Malik. But what is she saying? She is saying that don't give him this thing. Reform is the need of the hour. She's again trying to threaten the central government by saying, Vikas, how painful it is, because you have lost your father because of terrorism. How painful is it when you see these Kashmir-centric netas speaking for these terrorists, beating their chest for terrorists, not speaking for the victims, neither you or Amreen? So clearly, Pradeep, we'll keep a close watch and get those voices once again as far as the entire